in our last classes, right, हमें already बुझी सारछे जे को तीनटा सर्विस प्रोवाइडर जे को मार्केट लीडिंग वर्तमान अछि ता भितरु AWS वर्तमान नंबर 1 मार्केट लीडिंग रे अछि, नंबर 1 मार्केट लीडिंग रे। तो आमे काहे की AWS सिखिबा, AWS कोन एक्चुअली AWS ता कोन और काहे की हमें AWS सिखिबा, राइट। तो लास्ट क्लास रे हमें बुझितले कि को टाइप रो सब सर्विसेस रहउची, राइट, जेमति कि IAS, SAS, PS, राइट, IAS, PAS, SAS, ऑन प्राइमिसेस तुमको बुझिबा दरकार जे कोटा ऑन प्राइमिसेस हमें यूज करबा, कोटा को जगह रे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करबा और कोटी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज करबा और कोटी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज करबा। तो रिक्वायरमेंट को तमे यदि कंप्लीटली बुझी पारिलो देन तमे यदि कंप्लीट डिटेल्स ता तमे माइंड रे रखी पारिलो देन इजीली तमे कोन करबो डिजाइन करि पारिबो, राइट। तो आज सिखिबा चलो व्हाई AWS, राइट। सो ये पर्टिकुलर स्लाइड से तमे देखियो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मार्केट वर्तमान जदि तमे हमें देखिबा तो मार्केट शेयर बाय AWS इज 34% and by Azure 21% by 2022 market capture share captured, okay, 11%. And now it has been changed, and this particular diagram I'm going to update in our next slide, okay. So that's why the first thing we need to understand, right, kahe ki Amazon web services by AWS kahe ki ete demand achi market re देखिबा को गले फर्स्ट थिंग्स Amazon रो फुल फॉर्म AWS रो फुल फॉर्म अछि Amazon Web Services, right, web services. So web services means the services which we can access through the web, right, through the web browser, right, through internet. Those are the web services. Now let's move on. So Amazon Web Service is a collection of remote computing services. Remote computing services means जोटा कि remotely हमें computing services access करूचे, जोटा कि locally रोची कि जोटा हमर लैपटॉप रे जो सर्विस रोची कि डेस्कटॉप रे जो सर्विस रोची, डेस्कटॉप रे जो माने हमर कंप्यूटिंग पावर रहला जेमति कि प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, तो ये सब हमें कोन कोन locally ताको access करूचे through connecting and touching the keypad and keyboard and all these things. बट जोटा कि रिमोटली रोची जोटा कि अन्य माने जोटा कि हम सर्विस प्रोवाइड करछथि रिमोट कंप्यूटिंग सर्विसेज जोटा कि ग्लोबली समर एल्स सम जियोग्राफिकल लोकेशन स्टोर होची, राइट, also called web services that together make up a cloud computing platform offered over internet by Amazon.com. So Amazon.com is the cloud service provider who is providing this one, right? So basically हमें जो देखिबा को AWS is a suite of hosting products that aim to take headache out of the traditional hosting solutions. तो हमें कौन करबा ना hosting products जे कोन सी सर्विसेज तमे गोटे होस्टिंग प्रोडक्ट जोटे एप्लीकेशन तमे गोटे सॉफ्टवेयर की गोटे जे कोन सी वेब एप्लीकेशन तमे होस्ट करिया को जाउ तो बेसिकली तमे कोन करबा ना गोटे सर्वर नब जदि तमे ऑन प्राइमिसेस कथा हमें देखुचे ऑन प्राइमिसेस रे हमें कोन करिया गोटे सर्वर नबा गोटे लैपटॉप नबा तादरे किछि सपोज जावा एप्लीकेशन कि जावा सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल करछे तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द जावा एप्लीकेशन। सो जावा एप्लीकेशन पे हम कोन दरकार गोटे वेब सर्वर दरकार जोटा कि आइदर टॉमकैट ग्लासफिश, राइट, और ए सब टाइप रो अछि वेब सर्वर। तो से वेब सर्वर कोन करबा ना हमें हम एप्लीकेशन हम सिस्टम रे ही फर्स्ट इंस्टॉल करबा, इंस्टॉल सरला पर जावा इंस्टॉल होबा, जावा इंस्टॉल हो से एप्लीकेशन ता हमें से टॉमकैट सर्वर रे डिप्लॉय करबा। बट एठी कोन होछ माने होस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी तुमको देई दोछन, तुमका से सब करबा को पड़िबा, तमे डायरेक्टली यू कैन यूज द ट्रेडिशनल होस्टिंग सॉल्यूशंस अपेक्षा तमे डायरेक्टली AWS जो सूट प्रोवाइड करछ तमे डायरेक्टली यूज करि पारिबा, राइट। So let's see why AWS is better than the competitions for big and small users. जेमति कि हम लास्ट क्लास रे कहितली क्लाउड टा में काहे की यूज करिबा ना आज यू गो प्राइस मॉडल रे, आज यू गो प्राइस मॉडल रे। सो AWS बेसिकली कोन होची ना प्रोवाइड करची बोथ पब्लिक as well as private cloud. So public, that is why AWS is very demand in the market because see AWS कोन करना स्टार्टिंग रू तार एमती माने माने माइंड करची रे फर्स्ट कोन करियो ना फर्स्ट स्टार्टिंग रू से कोन 24 months, sorry 12 months, 24 means total 12 months means for 1 year it gave free for 24 hours, for 24 hours
12 months it get free, means free to use, all the services free to use. So ସେଥିପାଇଁ କଣ କରେ ନା most of the developer ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲାଉଡ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରେ ନା AWS ର ଯେତିକି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ବଟ୍ ଫ୍ରି, ବଟ୍ ସେଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ପଲିସି ଅଛି ଯୋଉଟା କି କିଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ଫ୍ରି ଆଉ କିଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ତମେ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ କିଛି ସର୍ଭିସ ଯୋଉଗୁଡା ଫ୍ରି ଅଛି ତା ଉପରେ ବି ଯଦି ଫ୍ରି ଲିମିଟ ପଳେଇଲା ପରେ ଲିମିଟେସନ୍ସ ଗୋଟେ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଲିମିଟେସନ୍ସ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ତମକୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତି ମାନେ ଇଚ୍ ସର୍ଭିସ ପଢିବାକୁ ଯିବା, ରାଇଟ୍। ସୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଅଛି କାହିଁକି AWS ମାନେ କମ୍ପିଟିଟର ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କେଟ ଉପରେ କାହିଁକି ଏତେ ପପୁଲାର ହେଉଛି କଣ ପାଇଁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଅନ୍ ଦ go pricing model. So Amazon took a refreshing approach to pricing its hosting when launching AWS. Every service you pay for what you use. Every service you pay for what you use. तुमको फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर किछि तुमको करबाकू पड़िबनी, किछि कैपिटल एक्सपेंडिचर करबाकू पड़िबनी, कैपिटल मनी दबाकू पड़िबनी। तमे कोन करबो, फर्स्ट यूज करबो, यूज द सर्विस देन पे इट। Okay, so this makes a lot of sense for server infrastructure as traffic tends to very bursty, especially larger the site is. So जेतबे हमें गोटे बहुत लार्ज साइट देखो गोटे लार्जर साइट माने तमे यदि भाबी परिबा हमें यदि amazon.com को भी नियो ई कमर्शियल साइट, तो amazon ई कमर्शियल साइट हमें यदि देखिए ग्लोबली ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ଲୋବାଲି କଷ୍ଟମରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ନଟ୍ କି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଏରିଆ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋବାଲି ସ୍ପେସିଫିକ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲି ଅଲ୍ ଓଭର ୱାର୍ଲଡରେ, ତ ଯେତେ ବି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଟାର୍ଗେଟ ଭାବି ପାରୁଥିବ ତାଙ୍କର ସାଇଟ୍ କେତେ ବଡ ହେଇଥିବ, କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ରଖିଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ, ଡାଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ, ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ, ରାଇଟ୍। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ କଷ୍ଟମର ୱାର୍ଲଡରେ ବିଲିୟନ ବିଲିୟନ ଟ୍ରିଲିୟନ କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭରକୁ, ରାଇଟ୍, ସେଇ ଟାଇପର ସର୍ଭର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେସ କରିବା ପାଇଁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ କାପାସିଟି ଥିବା ଦରକାର। ତ बेसिकली तमे देखिबा गले अमेजन कथा छाड़, बेसिकली देखिबा गले तमे भी जेतबे सपोज आमे गोटे सर्वर क्रिएट करछे आ से माने गोटे एप्लीकेशन क्रिएट करछे, आमे चाहूछे से एप्लीकेशन टा 24/7 100% अप टाइम रही। तो आमे कोन करे, आमे सही टाइप रो ही सिस्टम गोटे नबा जोटा कि 100% अप टाइम दउतो, प्रोसेसर परफेक्ट थिबो, मेमोरी परफेक्ट थिबो, इलेक्ट्रिसिटी परफेक्ट थिबो, नेटवर्क परफेक्ट थिबो, राइट। तो सही टाइप रो कोन करछे ना टेंड्स टू वेरी बस्टी स्पेशली फॉर द लार्जर साइट्स। तो traffic trends ସେଥିପାଇଁ यूज କରାଯାଏ। Traditionally, hardware for the most part goes unutilized for 90% of its life cycle. तो आमे यदि ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल आमे यदि थिंक भाबिबो ऑन प्राइमिसेस कथा, ऑन प्राइमिसेस कथा। सो ऑन प्राइमिसेस रे कोन होउछ ना, आमे निजे गोटे सिस्टम किनि देले, राइट, आमे गोटे निजे सिस्टम किनि देले, बट से सिस्टम ता किछि दिन पई यूज होला, सपोज फॉर 2 इयर्स हमर प्रोजेक्ट डन हे गला, सरी गला, राइट। प्रोजेक्ट सरी गला पर कोन होउछ ना, से सिस्टम ता आउ यूज हे परिबोनी कारण हम पाखे प्रोजेक्ट नै यूज करबा पय। तो unnecessary we are going to take a burden to maintain this server also, right? So एटी कोन कहूछ ना, ट्रेडिशनल हार्डवेयर जो ट्रेडिशनल हार्डवेयर हम किनिथिबा 2 इयर्स पर goes unutilized for 90% of life its life cycle, right। जदि हम गोटे हार्डवेयर किनुचे ताको मोस्टली देखिबो एटा केवल वेरी वेरी कॉमन एक्चुअली तमे जे कोनसी आईटी सेक्टर को जाओ, जे कोनसी सॉफ्टवेयर कंपनी जाओ, ताकर वेयरहाउस रे देखिबो बहुत सारा हार्डवेयर आ इक्विपमेंट सब पड़िथिबो कारण यूटिलाइज होनथिबो पड़िथिबो। तो कारण से माने परचेज करिथिबे किछि पे यूज होला, तापर जदि प्रोजेक्ट सरिला किछि पर्टिकुलर काम आ होबनी से कोन करे नै फोपाड़ दे ताको वेयरहाउस रे नेकी गदा कर रखिबे। बट सेही दिनसटा हमें जदि क्लाउड रे यूज करबा कोन हमरा क्लाउड रे यूज कले बस जति समय यूज कले तार पैसाटा दे देले पैसा ताको रखि देले। तो हमको अननेसेसरी हार्डवेयर परचेज करिकि ताको किछि दिन यूज करि कोन नष्ट करिया नै। तो सेही मॉडल पई ऑन द गो प्राइसिंग पई इट इज वेरी पॉपुलर। ओके, so AWS helps deal with this problem by keeping it cheap during the slow time. माने जदि तमरे सॉफ्टवेयर तमर किछि दिन पई कि किछि मास पई कि किछि वर्ष पई तमरो यूज होउनी कोनसी मशीन तमे नै जाइछ, सेति पई AWS कोन करछ चीपर करछ। तो हमें कोन करना बेले माने सिस्टम जतो सर्वर यूज करछे स्टॉप करिकि रखि दबा, जे सर्वरटा मते किछि मास पई स्टॉप थाउ। तो से जो स्टॉप कर रखले ता पई से किछि मिनिमल चार्जेस नउची नॉट मोर चार्जेस। ओके, then next comes free tier. ई फ्री tier फाइन बहुत पॉपुलर है। आगु Azure दउतला केवल 30 days फ्री, केवल 30 days
जोटी ये दउतला Azure दउतला 30 days ओके Amazon Web Services दला 365 days 365 days फ्री ओके तो एथि पई AWS को बहुत सारा लोक जो माने भी ट्रेंड कोड पढुतले से माने सब कोन करले माने प्रैक्टिस करथले R&D करूथले तो डेवलपमेंट फॉर टेस्टिंग पई से माने कोन समस्त AWS को चूज करे तो सेति पे AWS पॉपुलैरिटी बढ़ी गला right the free tier which provides enough credit to run EC2 micro instances 24/7 all month right micro instances 24 माने गोटे EC2 रो गोटे जदि मशीन आमे नेबा 24 ऑल मंथ्स रो तार लिमिटेशन अछि को यूज बते देबा तो EC2 क्लास करिबा तो हम जानिबा रिजल्ट दिस इट कम्स विथ S3 स्टोरेज आल्सो 5 GB रो फ्री दोची 5 GB रो EC2 कंप्यूट आवर्स इलास्टिक लोड बैलेंसर आल्सो फ्री दोची एंड मच मोर बहुत किछ अछि जके देखिबा हमें केते फ्रीली यूज करि पाइबा अप टू 1 ईयर ता सहित जेते भी तार टर्म्स एंड कंडीशन सब तो रहउची किछ लिमिटेशंस भी रहउची हमें किछटा यूज करिबा परिबा किछटा यूज करि परिबा नाही ओके दिस गिव्स डेवलपर्स a chance to try out AWS API in their software which not only enhance their software but also ties them to AWS which benefits Amazon in the long run this gives developers that jota I botan कहउतली chance to try out AWS APIs in their software which not only enhance their software but also ties them to AWS जदि आमे गोटे कोनसी सर्विस यूज करिया फ्री ले किछि दिन पई तो मार्केट स्ट्रेटजी से माने फॉलो करछन्ती मार्केट एमिति लॉजिक फॉलो करछन्ती किछि दिन पई फ्री दे जेमति कि फर्स्ट 2014 रे जियो मार्केट को आसिला राइट जियो कोन कला 6 मंथ्स फ्री दे देला तो सब जाक जो माने फ्री यूज कर जो माने देखो नेटवर्क यूज करथले एयरटेल हो वोडाफोन हो कि बीएसएनएल हो से माने कोन से सिम हटाई कि से माने जो पोर्टिंग कर देले कोडी की जियो पूरा 6 मंथ्स फ्री देला तापर कोन कला चार्जेस आरंभ करता राइट तो सेही टाइप रो भी AWS कोन करछना वर्तमान किछटा रिड्यूस कलानी बट स्टिल फ्री दोउची स्टिल इट इज गिविंग फ्री ओके So performance wise देखियो गले माने ट्रेडिशनल मशीन होस्टिंग एनवायरनमेंट अपेक्षा जो परफॉर्मेंस ता दोची से क्लेम करछंती कोन कहलो 99.99% रिलायबिलिटी माने तुमको केबे भी तमे डाउन टाइम पाइबन तमे जति जे कोनसी सर्विस तांकर यूज करछंती से माने क्लेम करछंती जे 99% 99.99% of time माने almost 100% your server on whatever the services you are going to use they will be up so they're claiming high performance okay so in traditional hosting environment this probably would have mean downtime 404 errors तमे 404 errors केतोले पाइबो जेतोले किछि डाउन थिबो तमे पेज नॉट फाउंड की कोनसी सर्विस नथिबो पाउ नथिबो त 404 errors रखिबो आज वेबसाइट हैज बीन गॉन डार्क राइट but in a truly cloud hosting environment like AWS there is enough separation between processing and storage that sites can remain online and continue generating revenue even with reduced functionality so normally hame traditionally whenever we talk about traditional that means on premises जदि तमे नोटे ट्रेडिशनल मोडे निजर गोटे सर्वर क्रिएट करछ कि कंप्यूटर तमे होस्ट करछ तमर वेबसाइट हो कि एप्लीकेशन सेठी कोन होछ ना एप्लीकेशन ता किछि यदि प्रॉब्लम हैला तो कंप्लीटली 404 एरर देखिबो तमर डाउन सिस्टम डाउन होछ तो कस्टमर तम एप्लीकेशन को एक्सेस कर पारे बट सेम केसेस हियर इन AWS इट गिव्स से माने कोन करछथि ना तांकर मैनेज सर्विस बहुत सारा यूज करछथि जोथरे कि तमरो एप्लीकेशन ता से गोटे जगह रखु ना मल्टीपल वे रे मल्टीपल प्लेटफॉर्म रे मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन से जो टर्म को हम सिखिबा अवेलेबिलिटी जोन आ कोन नेक्स्ट स्लाइड रे ता भीतर से माने रखुछन तो जो टर्म हमें नेक्स्ट पढिबा को जाउछे से बहुत बहुत इंपोर्टेंट आ तमे क्लाउड कांसेप्ट ऊपर 100% बुझिबा को पडिबो राइट तो सेति पई it both भलो परफॉर्मेंस होछ but the performance power of AWS is in the storage the distributed nature of EBS S3 तो ये जो टर्म्स पूरा हम जतले पढिबा तमे क्लियरली बुझी पारिबा ए सब कोन आ कोन पई यूज होछ राइट नेक्स्ट कम्स डिप्लॉयमेंट स्पीड डिप्लॉयमेंट माने जो हमें रिलीजेस होची जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सरीला परे
तो आमे गोटे जगह डिप्लॉय करबा जोटा कि कस्टमर एक्सेस करि परिबे क्लाइंट एक्सेस करि परिबे तो एप्लिकेशन हमर रन हबो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रे मोस्टली डिप्लॉयमेंट को जाए राइट तो इफ यू हैव ever had a provision hosted web services it takes anywhere around 940 to 96 hours so normally what happens यदि तमे ऑन प्रेमिसेस रे गोटे सर्वर रे डिप्लॉयमेंट करबा को जाउछो तार वे तो कम करबो से सर्विस डिप्लॉयमेंट तमे बहुत सारा मैनुअल प्रोसेस करबा को पड़िबो मेंटेन करिया पड़े ता परे तमे डिप्लॉय करिवो तो बेसिकली इट टेक्स 48 to 96 hours some 24 hours some days देखिबो तुम पाकर गोटे मेसेज आसुथबो राइट कोनसी बैंकिंग एचडीएफसी बैंक हो एक्सिस बैंक हो जे आम सिस्टम एतिक एतिक रु एतिक समय पर्यंत डाउन रहिबो माने तमे एक्सेस करि परिबो राइट किछि सर्विसेज तमे पाइबन त माने कोन से माने मेंटेनेंस काम करूथिबे आइदर नुवा एप्लिकेशन नुवा फीचर किछि अपग्रेड करूथिबे तो से माने डिप्लॉय करूथिबे तो सेतिक बेले से तांको सर्वर सब डाउन मोस्ट ऑफ द बैंकिंग सॉल्यूशंस राइट बैंकिंग सेक्टर actually they have their own private clouds. They work their own private on-premises. So they don't go with public. The banking ta both secret se maintain करते both crucial both sensitive information था right तो ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ both private केवल ही use करते and what says deployment speed AWS shrinks that deployment time to minutes जो time ता अधिक time निये AWS ର deployment speed ता to minutes if you utilize their Amazon machine image AMI आमे जेतोले EC2 पढिबा EC2 सेक्शन रे आमे AMI टा सिखबा AMI Amazon machine images okay so security this is very important nowadays in the digital platform digital era right security is very important because without security no one can go to the IT market so mostly what happens any system you use even in your mobile you put security what security you put locks passwords logs face id या फिर fingerprint या फिर pins all these things for what for security only because nobody can watch your mobile or see your data right similarly AWS कोन कोछि ना हाई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जोटा यूज कोछि जोटा कि IAM जोटा हमें पढिबा को जिबा क्लास रे IAM means identity and access management identity and access management. Using this, it provides high security. So what happens? AWS access to the AWS resources can be restricted using the IAM. Using the roles in IAM, we can define the privileges for users and all this. This restricts the access to resources such that any ill-intentioned user, ill-intentioned user means जोटा कि खଳ प्रकृतिर लोक थांती माने जे चाहेबे किछ हार्म करे पे तम मोबाइल जने काहे कि नै कि माने चाहे तुम जी खराब चाहूथि राइट तुम मोबाइल नहीं तुम लॉक खोली किसी गोटे डिलीट कला कि किसी आउटसाइड मेसेज का पठेइ देला तो सही पर जदी किसी हैकर्स माने कोन देखंदी किसी डाटा हैक करबा पई किसी इंफॉर्मेशंस नवा पई तुम सिस्टम को तो से माने चेष्टा करथि कि हैकर तुम सिस्टम को जीवा पई तो जेतेबेले देखिबे वीक पासवर्ड किसी रही गला कि किसी सिक्योरिटी भलो बे सेटअप हेइनी तो सेटि पई बैड कोड लेखाई छी जेमी आबे रिसेंटली गोटे आसला जेंति क्लाउड स्ट्राइक आबे रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट रो सब जाको सिस्टम ब्लू स्क्रीन हे गला राइट आ से माने किसी एक्सेस करि पाइलेनी आ बहुत सारा जेंति कि एयरलाइंस आ बहुत सारा कंपनी अफेक्टेड हेले तो सेटा हला गोटे कोन कहलो सिक्योरिटी ब्रीच जो कंपनी क्लाउड स्ट्राइक जो कंपनी थिला जो कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करथला माइक्रोसॉफ्ट को सही सिक्योरिटी ब्रीच हला बरे केमिति ब्रीच हला ना बैड कोड से माने जो लिखितले सिक्योरिटी भलो भाबे परफेक्ट सिक्योरिटी नथला तो जे माने कोड डिप्लॉय करा गला नेक्स्ट अपग्रेड करा हला तो कोन हला सेति माने से एक्चुअली ताको ब्लॉक कर देला तो सेति पई प्रॉब्लम बहुत हला जे कोनोसी प्रकार कोनोसी माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स विंडोज सिस्टम वर नॉट एबल टू एक्सेस एबे भी जेमती सतीश तांकर सिस्टम रे गोटे सेमती ब्लू स्क्रीन क्लाउड स्ट्राइक रो ब्लू स्क्रीन एबे कहजंदी माइट भी तांकर सिस्टम अपग्रेड ही जाईची अपग्रेड हला परे जो बैड कोड ता जो वर्जन ता थिला सेटा ही अपग्रेड हेची जोति पई भी सतीश को लैपटॉप बर्तन एबे किस दिन तळे मते कहतले जे लैपटॉप काम कोनी बोली ब्लू स्क्रीन आसुची राइट बेसिकली अफेक्टेड इन द विंडोज सिस्टम्स बट लाइनक्स सिस्टम्स केबे भी तमे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू पाइबनी सेति पई मोस्ट ऑफ द कंपनीज तांकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से डाटा जो माने स्टोर करते से माने लाइनक्स सर्वर ही यूज करन जितनी सर्वर देखियो लाइनक्स सर्वर ही यूज करन कारण लाइनक्स सर्वर इज हाईली सिक्योर कंपेयर्ड टू विंडोज ओके फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली जे कोन से हमें सर्विस देखिबा को जीवा तो फर्स्ट हमें बेसिकली नॉर्मल
देखिबा बोले कोन फर्स्ट ट्राई करू कि गोटे सर्विस हम जो यूज करूचे फर्स्ट देखिबा हमें कॉस्ट तार प्राइस ता कोन हमकु सर्विस को टाइप रो दउची आ फ्लेक्सिबिलिटी केमते हम चेंज करि परिबा ए गोटे सर्विस रो आ गोटे सर्विस केमते इजीली चेंज करबा फ्लेक्सिबली यूज करि परिबा राइट ए टाइप रो गोटे सो most important feature in AWS is its flexibility. All services works and communicate together with your application to automatically judge demand and handle accordingly. तो जब हमें EC2 पढ़िबा सेते बेले हमें देखिबा लोड बालांसर ALB आउ इलास्टिक sorry auto scaling right SG auto scaling group केमती कोन काम करछंती right flexible way how they are connecting each other and connecting and just working so combined with fantastic API and the Amazon machine images you can have a completely customized solutions that provisions a server instance in under 10 minutes and is ready to accept connections once it comes online so that flexibility AWS provides that's why it's very popular okay any doubt so far guys we are going to learn these key terms and these key terms are very important and you should understand properly okay now ame AWS kon au AWS kon provide करछि काहे कि ame AWS सिखिबा बा काहे कि एते पॉपुलर ता विषय जानिले बट हम AWS रे किछ की टर्म्स जोटा जोटा कि हम पूरा क्लाउड जर्नी रे क्लाउड लर्निंग जर्नी रे हमको हेल्प करिवो ओके क्लाउड लर्निंग जर्नी फर्स्ट होछि रीजन टा कोन ये जो कीवर्ड गाइस तुमको कहबा जाउची कीवर्ड टा बहुत इंपोर्टेंट okay don't think that it will be very easy and will just read once it is done no एटा बहुत माने इंपोर्टेंट रहिबो तमरो कांसेप्ट क्लियर करिया पय आ क्लाउड जर्नी स्टार्ट करिया पय आ काम करिया पय तमे सब दिन जहां भी हम पढेबा को जाउची जो की टर्म्स पूरा सब मन रखियो राइट सो व्हाट इज रीजन AWS region is a physical location around the world where they keep the group of data centers. So first thing is what is a region? You can say region is a physical location around the world where they keep the group of data centers. So group of data centers, we'll see what is data centers. Okay, in our next slide. First, just remember AWS region is a physical location around the world where they keep the group of data centers. Each region consists of multiple isolated and physically separated availability zones. So इडी हम केतेटा टर्म सिखले देखो जानिले फर्स्ट हला तो region 1 data center कोन 2 आउ availability zone कोन 3 ये तीनटा बहुत इंपोर्टेंट अच्छा जानिबा पड़िबो ये सब कोन ये सब डिपेंडेंट each other राइट सो डाटा सेंटर गोटे सबसेट हला अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबिलिटी सब जोन हला गोटे सबसेट ऑफ रीजन सो रीजन होची गोटे सबटू बड़ो एरिया जहा भीतर अवेलेबिलिटी जोन रोची आ अवेलेबिलिटी जोन भीतर हमर डाटा सेंटर रोची राइट जति मु गोटे पर्टिकुलर डायग्राम क्रिएट करूची तो एटा को जति मु रीजन दोची रीजन तो रीजन अंडर रे हमर रहइबो अवेलेबिलिटी जोन ओके मु तर शॉर्ट फॉर्म दोच एजेड अवेलेबिलिटी जोन रे हमर मल्टीपल डाटा सेंटर रहइबो ओके DC1 DC2 तो कोनला डाटा सेंटर रोच अवेलेबिलिटी जोन रोच रीजन रे आ रीजन रे भी गोटे अवेलेबिलिटी जोन नथिबो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन थिबो तो हमें धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड रे सब बुझी जिबा हैला So what it says, in AWS region is a physical location around the world where they keep the group of data centers and each region consists of multiple isolated and physically separated availability zone. Suppose here it got availability zone roila, right? Moita go close so amar suppose I got availability zone. So multiple availability zone, right? AG1 and this is suppose AG2. आ भितर तांकर मल्टीपल डाटा सेंटर भी थिबो DC1 सपोज DC2 तो एडाला कंप्लीट रीजन बुझी परलो तो ये कंप्लीट रीजन रे
multiple availability zone and availability zone multiple availability zone ଭିତରେ data centers ରହୁଛି, right? So that is what it said. Each region consists of multiple isolated and physically separated availability zones. AWS has 25 regions around the world and 6 more are going to open shortly. So AWS has 25 regions around the world. Okay. Now, what is availability zone? Availability zones are the distinct isolated locations within an AWS region. Availability zones are distinct isolated locations within the AWS region. এটা ଗୋଟେ region, right? ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ region ଭିତରେ availability zone 1 2 3 ତିନିଟା availability zone ଅଛି. There are 80 availability zones currently AWS has. 25 regions, 80 availability zones. One availability zone, one may have one or multiple data center. जोटा कि मैं वर्तमान कहली गोटे AWS availability zone can have one or multiple data center. DC1, DC2, DC3 can have one or multiple data centers. One availability zone. So that means data center is the subset of the availability zone, and availability zone is the subset of region. Clear? Complete? Right? So one availability zone may have one or multiple data center, and this AG availability zone offers us the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant and scalable. Highly available, fault tolerant and scalable. These things, actually these three terms whatever we just heard, right? एटा कौन ना प्रोडक्शन रे बहुत यूज हुए, प्रोडक्शन रे काम करेगा. हाईली अवेलेबल माने हमर सिस्टम टा जल्दी केते माने केते हाईली अवेलेबल रहउची कस्टमर पाई, माने मोस्टली जे माने क्लेम कोछन जे हम 100% हमर सर्वर सर्विस दोउछु, तो हमर जे कोन सर्वर माने एप्लीकेशन नामे डिप्लॉय करछे 100% ऑफ टाइम रही. तो से माने केमिति कोछन ना availability zone रे multiple availability zone रे हम application को समान रखुछन. जदी गोटे application down हे गला तो से माने आ गोटे availability zone रे application टा customer face करिवो, right? तो सेति पे से माने highly available. This AG availability zone offers us the ability to operate production applications and databases that are more highly available, fault tolerant and scalable. Okay? फॉल्ट टॉलरेंट माने किछि फॉल्ट आसला जने इमीडिएटली रिकवरी ही पाउतबो कि फॉल्ट आसी गला तो सेटा माने कस्टमर पाक जानि पारु नथियो किछि फॉल्ट आसला समय ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ गोटे सर्वर रे पड़ी जाइथिबो, राइट? सेमि स्केलेबल मन इच्छा माने स्केलेबल तो जो स्केल करियो माने स्केल अप स्केल डाउन माने केतले इंक्रीज करि पारतो डिक्रीज करि पारतो माने डिमांड हिसाब रे इंक्रीज करिवो डिमांड हिसाब रे डिक्रीज करिवो, राइट? मतलब स्केलेबल. नेक्स्ट कम्स डेटा सेंटर. तमे बुझिले रीजन कोन, अवेलेबिलिटी कोन, नेक्स्ट कम डेटा सेंटर. डेटा सेंटर तमे जो माने सब कंपनी रे काम करूछो वर्तमान की कंपनी की कोडी देखिथिबो कोनसी शॉपिंग मॉल जाओ ताकर भी निजरो डेटा सेंटर आगु रखुतले, वर्तमान तो क्लाउड सब यूज कलेनी. आगु सब डेटा सेंटर रे कोन होतला ना देखियो गोटे गोटे चैम्बर रे गोटे गोटे बिल्डिंग रे समाने कोन करथने किछि हार्डवेयर इक्विपमेंट रखिते सर्वर तक कोनती सर्वर से सर्वर गोटे गोटे सर्वर देखियो बहुत सारा केबल कनेक्ट जेंति कि इमेज देखि पाछ, राइट? इमेज रे बहुत सारा केबल्स कनेक्टेड है, सर्वर कनेक्टेड है, तादरे स्टोरेज रहउची, तादरे कंप्यूटिंग पावर रहउची, तादरे मेमोरी रहउची, तादरे सब किछि रहउची, नेटवर्किंग एवरीथिंग. सो डेटा इट हला हमर कोन कहल ऑन प्रेमिसेस, एटा हला हमर ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा एक हुआ जाय हमर ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ऑन प्रेमिसेस जोटा हम यूज करछे ऑल हमर क्लाउड सर्विस रे हम निजे डाटा सेंटर यूज करछे. तो ए जो डाटा सेंटर ता सेटअप कराई छै हमर डाटा सेंटर में इज ए what it says, a data center is a facility, a dedicated space within a building or a group of building composed of networked computers, storage that business and organizations use, organize, process, store and disseminate the large amount of data.
सो जोटा कि आमे ऑन प्रेमिसेस देखुचे हम ऑफिस रे की बिल्डिंग रे रखुचे जोटा कि आमे निजे फील कर पाते देखि पाउचे टच कर पाउचे यूज कर पाउचे बट ए सेम डाटा सेंटर को जे माने जियोग्राफिक लोकल लोकेशन रे समर किछि गोटे अवेलेबिलिटी जोन रे को कंट्री रे रखिथिबे तो सेटा का हम इंटरनेट थ्रू रे यूज करबा तो सेटा ही कि क्लाउड कहउचंती आमे राइट तो बर्तमान आमे जो धर AWS को कनेक्ट करबा कि गोटे सर्वर किछि यूज करबा जेमति कि आमे facebook.com यूज करछे थोड़ी facebook.com हम पाखे अछि कि से को सर्वर रे तांकर होस्ट करछन तो आमे सेटा कौन करछे इंटरनेट थ्रू रे कनेक्ट करछे तो सेटा को ही से माने क्लाउड सर्विस कहउछन ओटे काइंड ऑफ क्लाउड सर्विस राइट बुझी वाला डाटा सेंटर कौन क्लियर ग्रुप ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर स्टोरेज मेमोरी एंड प्रोसेस राइट एवरीथिंग माने जोटा कि हमें कंप्यूटर हम जहां जहां भी अच्छी कंप्यूटर सिस्टम रे सब जगह कंप्यूटिंग पावर डाटा सेंटर रे थिबो राइट स्टोरेज बेसिकली स्टोरेज कहि परिबो कंप्यूटिंग पावर कहि परिबो मेमोरी कहि पर स्टोरेज तो देखो बेसिकली देखियो गेले डाटा स्टोरेज जोटा कि स्टोर करा होची तापर बेसिकली देख आउट देखियो गेले कि जोटा कि सर्विसेज प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग कैलकुलेशंस कैलकुलेटिंग कंप्यूटिंग से सर्विसेज सब प्रोवाइड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज बोथ ओके ये जोटा एग्जांपल बटन मु ड्रा करी कहउतले रीजन जदि एटा हमर रीजन हैला एंटायर सो अवेलेबिलिटी जोन रोची 1 2 3 तीनटा अवेलेबिलिटी जोन आ एटी हमें देखि पड़ता 1 2 डाटा सेंटर रहिला एटी भी दीटा डाटा सेंटर बट एटी चारिटा डाटा सेंटर राइट ए टाइप ऑफ राइट सो एनी डाउट गाइस डाटा सेंटर अवेलेबिलिटी जोन आ रीजन ऊपर एनी डाउट ये तीनटा बहुत इंपोर्टेंट गाइस ओके नेक्स्ट कम्स एज लोकेशन ओके सो एज लोकेशन टा की जानिबा को पड़िबो बहुत माने कंप्लीट आइडिया हमें एज लोकेशन को दरकार कहीं ना देखो बर्तमान फर्स्ट मते तुमको नॉर्मली गोटे कंप्लीट आइडिया दे दोची हमें सब नेटफ्लिक्स यूज करछे राइट प्राय हम यूज करते नेटफ्लिक्स किंबा अमेजन प्राइम वीडियो तो तो सेमानकर सर्वर एक्चुअली कोड थाए तांका सर्वर वे तो यूएस रे कि सिंगापुर रे अलगा कंट्री रे कोडी थिबो राइट तो सेटा को हमें इंडिया रू ओडिसा रे बसिकरी भुवनेश्वर रू हमें कनेक्ट करूछे राइट कि को जगह स्पेसिफिक एरिया रू हमें कनेक्ट करूछे कोडी नेटफ्लिक्स को कनेक्ट करी कोनसी वीडियो हमें देखुछे तो से वीडियोटा एते फास्ट आ एते फास्ट बफरिंग होउची केमिति काना सर्वर रोची कोडी गोटे यूएस रे तो एटू ओडिसा रू बसिकरी हम यूएस सर्वर को कनेक्ट करी कि तार डाटा हमें फेच करूछे ता डाटा हमें व्यू करूछे तो केमिति एते फास्ट होउची फर्स्ट थिंग तो हाई स्पीड नेटवर्क दरकार रोची राइट जो बफरिंग कैपेसिटी टा राइट फर्स्ट कोन होछला तमे अर्लियर डेज जीवो जे माने आमी तो मु जे तो इंजीनियरिंग करतली 2002 कथा कहछि 2 रू 6 भितरे तो सेते बेले कोन होतला माने आमे यूज करतलु सेते बेले 2G ही थिला बोधे बहुत 2G थिला बहुत स्लो नेटवर्क थिला राइट तो आमे तो से 2G रे आमे तो हो 2G हेतले 2G थिला माने सेते बेले सही लेवल रे भी नेटवर्क थिला राइट तो जे कोन से वीडियो हमें ऑनलाइन देखो तो से कोन होवे ना बफरिंग हुए बहुत बफरिंग करे तापर पुनी आसे पुनी किस बफरिंग हबो माने ता माने कोन होचे डेटाटा तमर कैशे रे लोड होउची माने डेटाटा तमर लोड होउची लोड हैला पर तमे जाई वाच करिवो एते टाइम नोतला गोटे मूवी की किछि गोटे देखिबा पय हमकु राइट तो वर्तमान डेज रे से माने कोन कहउछ ना गोटे एज लोकेशन क्रिएट कर देने माने जदि हमर सर्वर अछि यूएस रे तो हम इंडियन पीपल को इंडियन कस्टमर को टारगेट करिया पे से माने कोन कहउछ आ गोटे छोटो एज लोकेशन बा डाटा सेंटर बळे एज लोकेशन तक को जाय जोटा कि क्रिएट कर दोछन इंडिया रो कोनसी गोटे जगह रे तो कोन होछ ना इंडियन पीपल कोन कहउछ डायरेक्ट यूएस सर्वर को न कनेक्ट करके कनेक्ट हे होछ एज लोकेशन जोटा कि नियरेस्ट हैला जेते नियरेस्ट हेबो हमर सेते फास्टर रिट्राइवल डाटा हेबो त हम जल्दी व्यू करि परिबा तो सिमिलरली व्हाट इज सेड a site that cloud front uses to cache copies of your content for faster delivery to the users at any location right तो सेति पई सबु जाक कंपनी आजिकली माने नेटफ्लिक्स हो कि जे कोनसी कंटेंट या ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला हो से माने कोन कहउछन त नियरेस्ट जगह रे तमर जोउटी अछन दे आर कीपिंग देयर ओन एज लोकेशंस दैट इज स्मॉल डाटा सेंटर there are currently 17 CloudFront edge locations in India 17 okay 4 in Hyderabad 4 in New Delhi 3 in Bangalore 3 in Mumbai
2 in Chennai, and 1 in Kolkata. So Odia people, where they will be connected? Odia ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବା ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସବୁବେଳେ କୋଉଠି କୋଲକାତା, ରାଇଟ? ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତମେ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ ୟୁଜ କରୁଛ କି ଯୋଉଟା ଇଏ କରୁଛ ସବୁବେଳେ ଚୁଜ କରିବ ତମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ତମର ଫାଷ୍ଟ ରହିବ। ନିୟରେଷ୍ଟ ଏରିଆରେ ତମ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ନେଟୱାର୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ତମେ ଇଜିଲି କନେକ୍ଟ କରିକି ଡାଟା ଆଣିପାରିବ, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ତମକୁ ଆସିବନି, କାରଣ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣିବା ଆଉ ପାଖରୁ ଆଣିବା ଭିତରେ ତଫାତ ରହିଛି, ରାଇଟ? So if you see this diagram, right? ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କଣ ଅଛି ନା ଏଡ୍ଜ ଲୋକେସନ ର पर्टिकुलर रीजन जोटी की सपोज हमर एटी नेटफ्लिक्स रहिला, एटी हमर नेटफ्लिक्स रहिला, राइट? ए नेटफ्लिक्स सर्वर आमे चाहूचे मूवी देखिबा पई ये गोटे रीजन रे ये गोटे पर्टिकुलर रीजन रे किछ लोक रहिले, सॉरी किछ माने एरिया रो लोक एपटे किछ रीजन रो लोक एपटे किछ रहिले, एटी किछ रहिले। तो से माने जतले वाच करिवे से माने कोन करिवे गलो डायरेक्ट सर्वर न कनेक्ट करी गोटे गोटे एड्ज लोकेशन देखो, एड्ज लोकेशन यही गोटे एड्ज लोकेशन एटी क्रिएट हला, एटी गोटे क्रिएशन। So specific edge locations they created in different. Suppose this is Hyderabad, this is Chennai, and this is Bengaluru. Okay. What happens? All these edge locations. So nearest people will connect to these edge locations, and that edge locations, whatever the content will already have cached to this, already have cached to this edge location. So copy will be available here. So they don't have to necessarily go to the region. So they are using what? CloudFront edge locations. AWS uses this CloudFront technique or CloudFront service to use it. So suppose you are also going to do that, then you have to use this CloudFront service. Okay. I mean, देखिए केमती कौन CloudFront setup करें बहुत easily पाइबा पाएं, right? Okay. So these are the services what we are going to see, but in these classes we are not going to cover, there are few services will not be covered, but mostly everything 23 services are going to cover, 22 services. IAM first, S3 we are going to CloudFront, EC2 service, security group, EBS, EFS, CloudWatch, CloudTrail, okay, database, Route 53, VPC, ये सबू हमें कवर करबा को जाउछे, राइट? सबू हमें कवर करबा को जाउछे। लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, बिन स्टॉक ता हमें करबानी, इलास्टिक आईपी देखिबा, नेट गेटवे देखिबा, सबनेट क्रिएशन अंडरस्टैंडिंग बुझिबा, इलास्टिक ईसीएस ईकेएस भितरे आईडिया देबी तुमको, एससीएस एंड एसएनएस ये सब सर्विसेज। ऑब्वियसली यदि हमें बोथ कंबाइंड क्लाउड आउ डेवऑप्स को सिखिबा कंप्लीटली, देन हमको 6 मंथ्स कांस्टेंटली लागेबो। जदि कंप्लीट सर्विसेज आउ डेवऑप्स हम सिखे 6 मंथ्स रो कोर्स एटा, बट हम सही हिसाब रे जति के हमको दरकार, जति के हमें डाइजेस्ट करी परिबा आउ मार्केट को जाई इजीली जॉब पाई परिबा, तो सति की वर्तमान हमें पड़ीबा, नॉट एवरीथिंग। ओके, सो सहीटा है गोटे खराब माने मार्केट रे चली जो ट्रेंड हम कोची करे, खराब ट्रेंड जोटा मिथ रहउची जे तमे डेवऑप्स करछ माने तमे सब जाक जानि के जिबा पड़िबो, बट तमे फर्स्ट जानियार अछि डेवऑप्स टा कोन एक्चुअली काहे कि हमें यूज करछे। बट सेटा पिला प्राय न बुझिकरी कोन करछ ना मार्केट रे जंप करछंती आउ सब जाक टूल से काउरे धरि पकोछंती, त हमें सब सिखि दबु आ पूरा माने मार्केट को जाई सब जॉब मिली जो। बट सेटा एक्चुअली जब तमे सब जाक एका संगे धरि पकेबो तमे जानि परिबनी कोउटा कोन कोउटी यूज करबो कोन। बस फर्स्ट तमे जानिबा सिख जे केमती एंट्री करिवो, राइट? फर्स्ट डेवऑप्स भीतर कंप्लीट नॉलेज नियो, स्लोली किछटा टूल्स सिखो, किछटा सर्विस क्लाउड सिखो, ता ऊपर तमे प्रैक्टिस करो, जाना एंट्री करो, जानि गला पर धीरे 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 नले काम सिखि जीवो ना, तापर ऑटोमेटिकली बाकी सर्विसेज बाकी टूल्स तमे ऑटोमेटिकली तम भीतर आछे, तमे करिवो ही सेटा काम, राइट? तो वर्तमान आमे जति सब जाक सर्विसेज पढिबा, तुमको किछटा सर्विसेज किछटा टूल रे मास्टर कराई देबी, सेते तमे जॉब पाइबो। बाकी सर्विसेज हम धीरे धीरे पढिबा जोटा कि, बट आमे जॉब टारगेट पई आमे किछटा सर्विस फर्स्ट सिखिबा और किछटा टूल सिखिबा जोटा हम इजीली मार्केट रे जॉब पाई परिबा, बोलो जॉब पाई परिबा, हला ता भीतर सेति पई हम कहू 3 to 4 मंथ्स लागे हमें बेसिक सर्विस यदि कंप्लीट सिखिबा बोले 6 मंथ्स कोर्स, बोथ क्लाउड और डेवऑप्स। नॉर्मल डेवऑप्स टा खाली डेवऑप्स होची 3 मंथ्स भीतर सरी जिवो, कि खाली क्लाउड 3 मंथ्स भीतर सरी जिवो, बट जदि कंबाइनली हमें करिबा तो 6 मंथ्स लागिवो। आ जदि हमें जति कि मार्केट जॉब रिलेटेड टॉपिक्स पढिबा और मार्केट माने एक्सपर्टाइज लेवल को जियो चाहते तो सति के हिसाब में 4 मंथ्स भीतर हमें ताको टारगेट करि परिबा, राइट? ओके,
एनी डाउट गाइस हमें बर्तमान किछि डाउट जदि तम पाखर अछि किछि कथा ही परिबा नले मु सेति आउ किछि बर्तमान पढिबा को जाउनी मे बी हमर नेक्स्ट क्लास रे हमें आईएम आ बाकी सर्विस स्टार्ट करिबा तो किछि यदि डाउट अछि so let's discuss now okay हेलो Vanu Satish हेलो हाँ yes sir अर्जुन हाँ speaking को sir सर आपण जोटा कहले डाटा सेंटर जोटा कहले डाटा सेंटर इन द सेंस आपण म्हणजे कहते डाटा सेंटर टा फिजिकल ना वर्चुअल सर देखो एग्जैक्ट बड़े बड़े क्वेश्चन डाटा सेंटर टा एक्चुअली फिजिकल डाटा सर सेंटर टा फिजिकल माने फिजिकल डाटा सेंटर टा फिजिकल कहा पाई जे सर्विस दोउची माने एडब्ल्यूएस सर पाई डाटा सेंटर तार फिजिकल बट आम पाई कोन हो सेटा वर्चुअल वर्चुअल काहे कि आमे कनेक्ट करछे इंटरनेट थ्रू वर्चुअली दैट इज द क्लाउड क्लाउड ओके हेले गोटे ओके वर्चुअली कनेक्ट करछे यस सम डाटा सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन तो सर एडब्ल्यूएस जोटी क्रिएट करछि ता पाई सेटा फिजिकल तो आम पाई सेटा वर्चुअल अच्छा सर ओके राइट सर सर आउट क्वेश्चन बता चले हेलो हाँ 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 सर आपण जोटा कहले EC2 और S3 EC2 टा डाटाबेस सर इसीटूटा बोले EC2 S3 आउडा कहते लैम्बडा अच्छा तीन टाइम तो सर गोटे टाइप रो ना डिफरेंट काइंड ऑफ डाटाबेस अच्छा अच्छा देखो EC2 टा हैला इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड जोटा कि हमें सिखिबा मशीन क्रिएट करिया पई सेटा ला गोटे अच्छा सर सर्वर क्रिएशन पई सर्वर पई अच्छा हम सर यूज करबा EC2 सर्विस और S3 हैला स्टोरेज पई डाटा स्टोर करिवा पई हैला और लैम्बडा जोटा हम कहतली लैम्बडा यूज करा जाय एपीआई कॉल पई जोटा कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग बिना सर्वर रे केमिति एपीआई यूज करिकि तमे हमर काम करि एपीआई कॉल परिबो पे कोडा एपीआई कॉल पे हम लैम्बडा यूज करते हाँ लैम्बडा जोटा कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग माने लैम्बडा रो किछि गोटे फंक्शन रहउची छोटो मोटो फंक्शंस रहउची लैम्बडा फंक्शन ताकू कुआ जाय बा लैम्बडा एपीआई तो लैम्बडा एपीआई यूज करिकि तमे जे कोनसी काम चाहूचो करिवा पई तमे करि परिबो ता पई टिके पाइथन स्किल दरकार पड़िबो हैला लैम्बडा पई अच्छा सर ओके एनी अदर डाउट बानो एनी किछि डाउट अछि ନାଇଁ ସାର୍ ବାକି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ପୋର୍ଟାଲ ଶୋ କରିକି ଯୋଉ କେତେ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ରହୁଛି ଆଉ କି ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ ର କାମ କଣ ରହୁଛି ସେକ୍ସନ ରେ ଯେମିତି କି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମେସିନ ଲର୍ନିଂ ପାଇଁ କି ସର୍ଭିसेସ୍ ରହୁଛି କଣ୍ଟେନର କ୍ୟୁବରନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ କି ସର୍ଭିସ ରହୁଛି ଡାଟାବେସ୍ ପାଇଁ କି ସର୍ଭିସ ଆଉ ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ हाँ बढ़िया बढ़िया थिंग कहले हाँ आमे सेटा नेक्स्ट करिया कारण से आईएम टा जेतु आमे काली आईएम टा काली पढिबा तो वर्तमान आमे कोन करबा ना लेट्स गो एंड सी हाउ टू कनेक्ट मु जेमति कहली एडब्ल्यूएस हमर कोन रहउची कंप्लीटली फ्री रहउची राइट 24 आवर्स 12 मंथ्स फ्री रहउची एंटायर 1 ईयर फ्री तो फर्स्ट आज हम तुमको बतै दोची एडब्ल्यूएस केमति यूज करबो एडब्ल्यूएस साइन अप करबो अकाउंट फर्स्ट गोटे एडब्ल्यूएस रे क्रिएट करबो राइट ए डिटेल्स रे बतै देबी तापर नेक्स्ट सर्विसेज हम आईएम बाकी सर्विसेज से पढिबा राइट तो एडब्ल्यूएस रे कोन जेमति कहली एटा गोटे हमर कोन रहउची वेब सर्विसेज माने थ्रू वेब हमें कनेक्ट करबा तार तार वेब सर्विस होची aws.amazon.com तुम जदि टाइप करिवो aws.amazon.com then aws.amazon.com तो आसी जीवो टोटली कंप्लीटली लेट मी इंक्रीज दिस फॉन्ट लिटिल बिट आसी गला तापर जदि तुम पाखरे अकाउंट अछि तमे साइन इन टू द कंसोल करि परिबो डायरेक्टली जदि नाही तले तमे निजे गोटे अकाउंट क्रिएट करि परिबो लेट्स क्लिक ऑन दिस साइन इन टू कंसोल तो ये देखिए क्रिएट न्यू AWS अकाउंट ओके क्रिएट न्यू AWS अकाउंट क्रिएट कल तो मु माने एटा बहुत इजी मु तुम बतै दोची राइट रूट यूजर ईमेल एड्रेस तमे जो रूट यूजर ईमेल एड्रेस ता दबो मने रखि थाओ ए रूट ईमेल एड्रेस ता हला तमरो बेसिकली सुपर एडमिन एक्सेस माने एई गुट्टे ईमेल आईडी तुम यूज करिवो जोटा कि तमरो अकाउंट क्रिएशन आ तार सुपर यूजर जेमि ओनर ऑफ दिस अकाउंट माने अकाउंट रो ओनर तुम किछि भी करि परिवो आ जेतेबे अकाउंट दबो मने रख से अकाउंट से ईमेल आईडी ता को बहुत सिक्योर रखियो जेमि केई किछि यूजर ईमेल आईडी आ तमरो पासवर्ड नै न पारिबे राइट
आ से गोटे ईमेल आईडी तुम थरे यूज करबो Amazon वेब सर्विस रे अकाउंट क्रिएट करिया पई जदी तमरो माने 12 मंथ्स हेई गला राइट तो से अकाउंट ता तमरो चार्जेबल रे आसीबो किछ सर्विस फ्री रहबो बट किछ सर्विस चार्जेबल आसीबो तो सेही चार्जेबल रे तमे कोन करबो ना माने आइदर यूज करबो नले ताको ये करिक डिफरेंट आउट ईमेल आईडी करिक क्रिएट करबो अकाउंट राइट तो ईमेल आईडी देलो ईमेल आईडी देकी तमे AWS अकाउंट नबो तापर नेक्स्ट वेरीफाई करिवो वेरीफाई ईमेल एड्रेस कला परे तमर गोटे लिंक जीव तुम ईमेल एड्रेस को सेटा को हमें वेरीफाई करिवो हला वेरीफाई सरला परे तापर कोन करिवो ना जाइकरी गोटे सेक्शन आसीबो जोटी कि तुमको से मागिबो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सेठी तमे तमर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन टा दबो मु एटा जाउनी मूव करनी कारण हमर ऑलरेडी बहुत सारा अकाउंट अछि बहुत किंतु दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल आज यू गाइस आर ऑलरेडी नो technical guys and you should know how to do this sign up and all. It's very simple sign up form. So किसी क्रेडिट कार्ड दो बट कंफ्यूज हबार नहीं कारण से जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दबो से माने फर्स्ट 2 टंका ही तुमको चार्ज करबे 2 रुपीस ओनली 2 रुपीस चार्ज करबे बट से 2 रुपीस ता इमीडिएटली अकाउंट क्रिएट पर तुमको रिटर्न भी पळे आसीबो से माने गोटे सिंगल पेनी तुमको नेबेनी किछि सिंगल रुपीस भी तुमको नेबेनी तमेर हेई गला पर अकाउंट से कोन होची ना से माने एथि पई रखंती अकाउंट बाय चांस किछि ला तमे तांकर सर्विस यूज कलो कम कलो कि पेमेंट न करे सो वे तो तुम चार्ज करियो बट बिना तम इन्फॉर्मेशन रे से तुम अकाउंट टंकाटा भी नहीं पारिबे हला इवन मु एते सर्विस यूज कलानी प्राय 10 टू 12 सर्विसेज मु माने 12 अकाउंट मु यूज करूची आज मैं जति कि मु पेमेंट करूची प्राय सब अकाउंट रे किछ ना किछ पेमेंट रहउची मु पेमेंट भी करी दउची कारण जेतु ट्रेनिंग पर्पस रे म दउची सर्वर क्रिएट करूची तार चार्जेस मते आसुची मु पेमेंट करूची आ किछटा अकाउंट मोर अछि जोटा कि हमर पर्सनल यूज पई जोटी कि मोर निजर सर्विसेस आ एप्लीकेशन रन होची तार मंथली आसुची मंथली 2000 3000 बढ़िया कि समटाइम्स 100 1000 बढ़िया आसुची तो मु पेमेंट करूची राइट तो सही परी तमे जे कोनसी अकाउंट तमे क्रिएट करिवो तार सब जाक मेंटेन करी रखिवो आ क्रेडिट कार्ड से माने डायरेक्टली तुमको चार्ज करिवेनी जो क्रेडिट कार्ड तुमरो एक्सेस हेइतिबो सेठी तमे रजिस्टर करितिबो कि डेबिट कार्ड रजिस्टर करतिबो तारी द्वारा तमे पेमेंट करिवो हला तो से बिना बिना परमिशन रे समान तमरो अकाउंट टंकाडा भी नेबेनी राइट तो एमती प्रोसेस करी वेरीफाई ईमेल एड्रेस करी तमे फर्स्ट तमरो काम होला आजी गोटे AWS अकाउंट क्रिएट करिवो जदी नाही ओके जदी अछि देन यू कैन जस्ट लॉग इन टू द AWS अकाउंट तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सरिला परे साइन अप सरिला परे तुम फर्स्ट लॉग इन करिवो राइट लॉग इन कला माने कोन ना फर्स्ट गोटे एमती नॉर्मल पेज गोटे आसीबो जोटा कि तमरो कंसोल होम्स बा डैशबोर्ड को जाय कंसोल होम असला होम सेक्शन सो होम सेक्शन रे तमे कोन करियो डिटेल्स तमे जदी जीवो सर्विसेज को राइट मुझे इंक्रीज कर दोची तो सर्विसेज को जीवो राइट सर्विसेज रे तमे ओके फर्स्ट मुझे जस्ट एक्सप्लेन कर दिए होम सेक्शन रहला कंसोल होम तो एटी तमे देखलो सर्विसेज देखलो अब बाकी जो हमें रीजन विषय कथा आइतले राइट व्हाट इज द रीजन एंड ऑल तो मैं जस्ट राइट क्लिक करिवो इट सब तमे रीजन देखि पारिवो सी ये सब रीजन वर्तमान अवेलेबल अछि तो वर्तमान ए अकाउंट पई ये सब रीजन देखो यूएस ईस्ट नॉर्दर्न वर्जीनिया यूएस ईस्ट ओयो राइट यूएस वेस्ट नॉर्दर्न कैलिफोर्निया ओरेगन ये सब जगह यूएस रो अमेरिकन रो यूनाइटेड स्टेट ईस्ट वेस्ट रो सब सर तांकर जो रीजन सब अछि तांकर डाटा सेंटर ये सब रीजन रे अछि हमर एशिया पैसिफिक जोटा कि हमर जाउछि इंडिया जे मुंबई लोकेशन जाउछि एशिया पैसिफिक तो हमर मुंबई राइट ओसाका सियोल सिंगापुर सिडनी टोकियो हांगकांग ऑल सब ये सब एशिया पैसिफिक रे जाउछ तो हमर एशिया पैसिफिक रे वर्तमान गोटे रीजन अछि मुंबई आ गोटे रीजन कोडी म कहली हैदराबाद रे ओपन होबा को जाउछि तो हमें जदी तळु को टिके जिमा ए देखो एशिया पैसिफिक हैदराबाद so there are 12 regions that are not enabled for this account माने मो जो अकाउंट ता खोलतिली 1 year almost हे गलानी तो सेति पई सेत बळे ए सब अकाउंट रे ए सब हैदराबाद ए सब रीजन ऐड हेइनी तो सेति पई इट्स नॉट इवन नुवा अकाउंट तमे जदी करिवे क्रिएट करिया हो मे बी तमको एशिया पैसिफिक हैदराबाद भी शो करिवो हैला एटी डिजेबल शो करूची बट डिजेबल रे अछि तो एटा हला रीजन सेक्शन तो एटा रीजन सेक्शन रे तमे कोन देखुछो ना एटी व्हाट वी आर सीइंग हियर we have both region name as well as region code right it hala region code us amro mumbai pai rochi asia pacific mumbai pai rochi ap-south-1 ap-south-1 तो एई जोटा रोची एटा हमें केतबळे यूज करबा ना हमें तले प्रोग्रामिंग करूचे किछि एपीआई बनौचे किछि प्रोग्राम लिखुचे कोड लिखुचे आ कोड द्वारा हमें रीजन को एक्सेस करबा पई चाहूचे तो सेतबळे हमें एई कोड ता यूज करबा
मन रखता ए कोड जदि एते सारा कोड अछि ना तमे तो माने मन रखिबो तो बेसिकली मुंबई रीजन तो एपी हाइफेन साउथ हाइफेन 1 इजीली मन रहि जो राइट तो बाकी जो कोड तुम देखियो तो तुम रीजन को आसिक कोड चेक करि परिबो कोड लिखि परिबो राइट एसो होला कोड जानि पाइलो जो माने रीजन कोड केतल यूज हो जतो तुम प्रोग्रामिंग थ्रू प्रोग्रामिंग यू आर ट्राइंग टू एक्सेस टू द AWS सर्विसेज देन यू हैव टू यूज द कोड रीजन कोड ओके ये ला रीजन आउ एपटे साइड तुम देखियो तुम अकाउंट इनफॉरमेशन सब रोज अकाउंट इनफॉरमेशन तो अकाउंट आईडी सो तुम जो अकाउंट फर्स्ट क्रिएट करिवो 12 डिजिट जेम हमर आधार कार्ड भलिया आधार कार्ड भी 12 डिजिट तो 12 डिजिट भलिया तुमको गोटे अकाउंट आईडी से देबे इदाला यूनिक अकाउंट आईडी जे प्रति अकाउंट पे गोटे अकाउंट आईडी गोटे यूनिक अकाउंट आईडी रहइबो राइट तो तुम एटी यूज करि परियो बाकी इनफॉरमेशन हम स्लोली जेतले मूव करबा सिखिबा तो ये हला रीजन आउ अकाउंट विषय रे आउ सर्विसेज राइट जो सर्विसेज हमें सब देखैली मु तो जेता सर्विसेज तो सर्विस सेक्शन को जीवो एटी सब सर्विस सेक्शन कैटेगराइज्ड वे रे अछि सब कैटेगराइज्ड वे रे अछि माने जेंति की अरविंद पचारतले राइट EC2 S3 सब गोटे रे आछि ना नै बट EC2 टा हमर जाउछि कंप्यूट सेक्शन रे कंप्यूट कैटेगरी रे राइट कंप्यूटिंग पावर जोटा कि हम सर्वर क्रिएट करबा सर्वर कंप्यूटिंग एंड ऑल सो EC2 हला इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट हम सब विषय पूरा डिटेल्स रे पढिबा तो EC2 इज दिस कंप्यूट कैटेगरी भितरे हमर एते सब कंप्यूट सर्विसेज आसुची AWS ऐप रनर बैच EC2 इमेज बिल्डर इलास्टिक बिनस्टक लाम्डा भी कंप्यूट रे आसुची S3 टा आसीबो हमर स्टोरेज सेक्शन रे ओके लाम्डा EC2 आ लाइट सेल AWS बट लाम्डा रो काम अलगा EC2 रो काम अलगा EC2 हला सर्वर लाम्डा हला सर्वरलेस ओके एडा हम विषय जानिबा पूरा लाइट सेल AWS आउटपुट ये सब जाक सर्विस रहउची गोटे कैटेगरी भीतर कंप्यूटर रे एते सारा सर्विस रहउची राइट बट मोर देन 400 सर्विसेज आर देयर इन AWS मोर देन 400 सर्विसेज तो आमे किछि सर्विसेज तो सब जाक तो पढिबन ना किछि सर्विसेज जो 22 सर्विसेज 23 सर्विसेज मु कहली तारि ऊपर हमें टारगेट करबा राइट केवल क्लाउड रो तो कंप्यूट रहिला तो कंटेनर सेक्शन रे इलास्टिक ECR ECS ये सब रहिला राइट इस EKS कंटेनर भीतर डाटाबेस जदी हमें जानिबा चाहछे डाटाबेस ये सब सर्विसेज से प्रोवाइड करूछ राइट सब सर्विसेज DynamoDB इलास्टिक कैशे एंड ऑल ता सही परी जब हमें देखिबा स्टोरेज रे हमें जदी जीवा राइट स्टोरेज सेक्शन रो हमरो अछि S3 EFS AWS बैकअप कोन EFS कोन राइट FSX S3 ग्लेशियर स्टोरेज गेटवे S3 ये सब हमें पढिबा S3 हला सिंपल स्टोरेज सर्विस हमें जेतले पढिबा तो कंप्लीट डिटेल्स रे जानिबा तो स्टोरेज सेक्शन भीतर बा स्टोरेज कैटेगरी भीतर ए सब सर्विसेज आसुची सेपरी रोबोटिक्स हमें जदी तमे रोबोटिक्स इंटरेस्ट अछो त रोबोटिक्स सर्विस यूज करि परिबो सैटेलाइट ऊपर काम करछो सैटेलाइट सर्विस यूज करि परिबो तमे नेटवर्किंग कंटेंट ऊपर काम करछो क्लाउड फ्रंट आ नेटवर्किंग रे आसुची जोटा क्लाउड फ्रंट विषय रे बतौतली एज लोकेशन राइट एटा आसुची कोडी हमरो नेटवर्किंग रे डायरेक्ट कनेक्ट आसुची प्राइवेट AWS प्राइवेट 5G राउट 53 हमें जोटा पढिबा सेटा आसुची नेटवर्किंग भितरे VPC आसुची नेटवर्किंग रे राइट ए सब नेटवर्किंग भितरे हमें देखिबा तापर सेपरी मशीन लर्निंग तमे जदी किछि जानिबा को चाहूचो ए सब मशीन लर्निंग रो सर्विसेज किछि भी सर्विस तमे क्लाउड प्रो आसले AWS रे किछि सर्विस तमे नै पालो सेपरी इंटरनेट IoT राइट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस रे तमे कोन सब IoT डिवाइसेस सब पढि पालो ए सब डिटेल्स रे हमें जानि परिबा आ पढि पारे राइट गेम किछि गेम करिबा को चाहूचो फ्रंट एंड वेब आ मोबाइल डिवाइस क्रिएट एप्लीकेशन क्रिएट करिया को चाहूचो तमे सब किछि भी जान पारे राइट तो फर्स्ट थिंग तमरो काम हैला आजी first create one account with AWS and whatever I just said you just go and explore everything and remember first the very first day and every time I tell people whatever thing you are learning always follow the documentations of that particular topic or particular tools or language okay तो हमें डॉक्यूमेंट पढ़िबा द्वारा कोन माने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट रे से जो डेवलपर माने बनै जल्दी से पर्टिकुलर टूल को कि पर्टिकुलर सर्विस को राइट से माने कंप्लीट इंफॉर्मेशन देइथान जे ये सर्विस केमिति यूज करबा जेमि कि हमें कोनसी उडे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट किनचे त माने उडे यूजर गाइड देइथान राइट तो से यूजर गाइड कोन पय दिया जाता जो यूजर लोचे से केमिति यूज करबो ताको बताई दिया जाता राइट तो सेटा किए करथान जो माने बनै थांदी ताको डेवलपर मानो राइट
से परि जो सर्विसेस आम यूज करे प्रति सर्विस रे डॉक्यूमेंटेशन अछि आ प्रति टूल जोटा आम पढ़िया तार भी डॉक्यूमेंटेशन अछि अब कहीं के तुम फॉलो करिवो सेटा तो तुमको बतई देबी इनिशियली तुम केमती यूज करिवो केमती प्रैक्टिस करिवो बट तुम कहीं के फॉलो करिवो ताको ना कारण फ्यूचर जतबे से किसी गोटे सर्विस बाहर कले से कौन नुआ अपग्रेड किसी अपडेट किसी तो से जहाँ भी अपडेट कले से कौन कले ना डॉक्यूमेंट रे ऐड कले तो सेटा तमे अप टू डेट रहिबा पई तमे से डॉक्यूमेंट को ऑलवेज फॉलो करिवो आ तमे तो कोनसी प्रोग्रामिंग करूचो किसी डिजाइन करूचो तो सब जिनस तो तुम पढ़ा सरला पर मन तो रहिबोनी ना तो सब जगह कौन करियो तुम से डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करी इवन आई डू फॉलो द डॉक्यूमेंट्स ऑलवेज इवन मोर जिते भी देखिबो आ गोटे बेस्ट एडवाइस मु तुमको दउची तमे इंटरनेट रे जमिति भी जेकोनसी तमे मु तुमको कहली मु जति तुमको 100% भी दउची तम आडू तमे 200% ट्राई करिवो और किछि एक्स्ट्रा सिखिबा पा जे तमे किछि एक्स्ट्रा सिखिबोनी मु तुमको जेति की रोसई करी खाया देबो तमे सेति की खाइबो तमे अलगा किछि जानि परिबो राइट तो मु जेति की दउची ताडू तमे एक्स्ट्रा डिलीवर करिया पई एक्स्ट्रा सिखिबा पई एक्स्ट्रा ग्रास करिया पई जानो तो तापे कोन करिवो तमे इंटरनेट यूज करिवो गूगल करिवो जो की टर्म ता मु पढेली ता से की टर्म ऊपर तमे केमती एक्स्ट्रा जानिबो तो सेमिति हेले जाई तमे एक्सपर्टाइज आनी परिबो तमे बहुत जल्दी 3 मंथ्स भितरे तमे माने जॉब पई रेडी हे जिवो जद सेति की करिवो हम गारंटी दउ जे तमे सेति की न करिवो त तमे रेडी हे परिबो जॉब पई राइट तमे सेति की फर्स्ट करो मु जेति की डिलीवर कोची ताटू एक्स्ट्रा आनो सपोज अरविंद जदि दरकार तांको जदि 6 मंथ्स रो टाइम जे मु पूरा मास्टर हेबी तले मु जेति की 3 मंथ्स 4 मंथ्स भितर पढेबी सेति की 3 मंथ्स 4 मंथ्स भितर सेही टाइम सहित प्लस एक्स्ट्रा तांको बहुत एफर्ट दवा पड़े तमे आमे मुस्मे कोन कहतली जे आमे पर्टिकुलर पिला एक्चुअली काहे की फेल होती जानि छ कारण से माने डेडिकेटेड न थान फर्स्ट थिंग हला दे आर नॉट डेडिकेटेड तमे जदि कोनसी माने दिनसो भाबी दैछ जे मु करिवि माने तो सेटा फुल डेडिकेटेड करो नले छाड़ी दे टोले करो कारण तमे किछि समय पई जीवो तापरे रहिजो करे जे आमे देखिने ठेकुआ और कइछ स्टोरी जानि छ राइट तो ठेकुआ कइछ भीतर डिफरेंस कोन हो दी जण तो फर्स्ट जोश रे आसिले राइट ते आमे रनिंग कंपटीशन करिवा राइट ठेकुआ और कइछ बोथ रैबिट एंड टॉर्टोइस बोथ दे स्टार्टेड जेतोले स्टार्ट कले फुल डेडिकेशन रे स्टार्ट कले बट ठेकुआ कोन करना किछि बाटा जाई के रेस्ट कर देला माने तार कोन ना तार कंसिस्टेंसी ता ब्रेक हे गेला सीट बट कइछ कोन ना तार फुल कंसिस्टेंसी रे काम चली नता से चले जो जति की धीरे जीवा कथा स्पीड रे किंतु कंसिस्टेंसी से मेंटेन कला से केबे रहिनी बस काम करि चल तो विनर ऑलवेज से हला ऑब्वियसली से विनर हैला बट ठेकुआ लूज कला काहे कि ना डेडिकेशन त हमें फर्स्ट जोश आसी कि हम एटा करि देबी बट करि दबा पई तुमको कंसिस्टेंसी मेंटेन करिबा को you have to maintain the consistency otherwise तमे टोटली पारिबनी जदि कंसिस्टेंसी सेमिति सब बेले डिपेंड करतो ना माने गोटे हाई माने इमीडिएट ग्रोथ आउ स्लो स्टेडी ग्रोथ भीतर डिफरेंट इमीडिएट ग्रोथ में फुल डेडिकेटेड आसी कि तमे गोटे जंप मारि देलो फटकिन तमर ग्रोथ हे गेल ठीक अछि नो डाउट बट दैट ग्रोथ विल नॉट सस्टेन मोर टाइम इमीडिएटली फॉल हे जिवो बट तमे यदि स्लो स्टेडी ग्रोथ करूचो consistently consistently every day तमे किसी करी चलीच then definitely से growth ता जोटा रहइबो आ long term रे रहइबो and you will become an expert तमे expert भी हे जो सेते मुझे एमती के कहितली आगु AWS कोन करछि हमको टोटल 365 days free some limited service किछि सर्विस दे 365 days free दोछि हाउ किछि सर्विसेज अछि जोटा कि चार्जेबल राइट तो हमें कौन करिया को सर्विस फ्री टेल लर्न मोर अबाउट फ्री सर्विसेज so if you go to their 3 types of offers they providing 3 types of offer they are providing गोटे हला फ्री टियर फ्री ट्रायल वर्जन रे जो मान दोजन आ गोटे 12 मंथ्स फ्री राइट कि 12 मंथ्स पई फ्री देछि माने 365 डेज 1 ईयर पई फ्री आउ रोछि ना ऑलवेज फ्री ताकर एमती भी सर्विस अछि तमे यूज करि परिबो जोटा कि ऑलवेज फ्री माने लाइफ टाइम फ्री तुम किछि पेमेंट करिया पड़िबो सेटा ऑलवेज फ्री राइट तो सेमती किछि सर्विस अछि ऑलवेज फ्री रोछि आ बाकी सर्विस अछि 12 मंथ्स फ्री रोछि आ बाकी सर्विस जोटा रोछि फ्री ट्रायल रोछि तापर तमे पेमेंट करिबो राइट देखो कंप्यूट रे मु जदी कंप्यूट सिलेक्ट करबी कंप्यूट सिलेक्शन रे आसुची कोन Amazon EC2 750 hours free lambda 1 million
free request per month गोटे month रे 1 million free request Amazon Light Sale 750 hours okay elastic container 50 GB is elastic load balancing okay ELB elastic load balancing 750 hours free okay up to 12 months एटा 750 hours free और कौन free details भी दौची 750 hours per month 15 GB data processing 15 LCU is free दौची right तार terms and conditions रहुची so free तापरे धर मु कंप्यूट न सरी स्टोरेज सेक्शन को जीबी स्टोरेज रे हमर S3 आसु जोटा बर्तमान पढिले मु कोन कहइतली अप टू 5 GB फ्री दौची 5 GB रे तमे डाटा फ्रीली स्टोर करि पारिबो 5 GB रे डाटा तमे फ्रीली स्टोर करि पारिबो तापरे 20,000 गेट रिक्वेस्ट 20,000 पुट रिक्वेस्ट सो गेट एंड पुट रिक्वेस्ट माने गेट माने जोटा कि हां गेट करिवो राइट पुट माने जोटा प्लेस करिवो पुट अपलोड कलो रिट्राइव कलो जोटा गेट कलो पुट कलो राइट तो Amazon EFS इलास्टिक ब्लॉक ये सब डिटेल्स अछि एवरा सब तुम सर्विस जानि पारिबन हमें तो धीरे धीरे पढिबे तापर जान तुमको गोटे काम हैला तमर वर्तमान Amazon सर्विस को जाई करी तमे सिलेक्ट करी चेक करिवो कोन रहउची द 12 मंथ्स रो फ्री सर्विस कोन जदी क्लिक करिवो एठी तो ए सब सर्विस जोटा कि 12 मंथ्स फ्री दउची कोडा EC2 S3 RDS रिलेशनल डेटाबेस ओपन सोर्स सर्विस API ए सब दउची 12 मंथ्स फ्री ऑलवेज फ्री लेट्स सी कोटा कि ऑलवेज फ्री दउची देखो Amazon Dynamo DB 25 GB up to 25 GB always free 25 GB ताडू अधिया गले पैसा पड़िबो 25 GB free more than that they will charge you AWS Lambda free सबु SNS 1 million CloudWatch CloudFront Cognito SQS SWF ये सबु सर्विसेज राइट कंप्लीटली ऑलमोस्ट अराउंड केते सर्विस तो देइनी डिटेल्स था केते सर्विस टोटल फ्री दोची बट ये सबु स्टोरेज फ्री दोची राइट तो हमें स्टोरेज को जिबा स्टोरेज रो 12 मंथ्स फ्री एट लिखि देछु ऊपर स्टोरेज ता केवल 12 मंथ्स फ्री दोची S3 अप टू 5 GB पर मंथ तापरे चार्जेबल राइट ऑलवेज फ्री रे बहुत जो चार्ज फ्री दोची जोटा कि हमें यूज न करी यूज बेसी हबोनी बहुत रेयर Amazon Dynamo DB Lambda टा यूज हबो बट बाकी सब देखिबा कोड बिल्ड एग्रो सब कोड पाइपलाइन डेटाबेस माइग्रेशन से सब जोटा कि बेसिकली हमें यूज न करिबा एक्स-रे कोड आर्टिफैक्ट सी एटा गोटे कोड आर्टिफैक्ट दोची जोटा कि हम स्टोर करिबा ओके तो तम काम होला वर्तमान आज जे कोन जहां भी हम सब पढिले से सब just go home and do practice whatever we did just create object create whatever object we saw bucket right first create a bucket place some object place one image file send to your friend for fun right put some image says link टा कोन WhatsApp रो पठै दे ग्रुप रे से तांकर देखिबे पब्लिक एक्सेस दे देलो तो तमर किछि भी शेयर करिया पय चाहो तो तम सांग मानक सहित जस्ट गोटे बकेट क्रिएट करो जस्ट फॉर फन एक्चुअली तमे जे लर्निंग करूछ ना ताको फन हिसाब रे नहीं माने तमे एन्जॉय करबे जिकोस दिनस ता एक्चुअली तमे पढछ तमे एन्जॉय न करिवो सेटा को राइट देन हेई परिबन तमे जोटे खाइबा को जाउछ राइट तमे जी माने से खाइबा तमे टेस्ट न लागियो तमे एन्जॉय करिवो भल न लागे तमे जी एन्जॉय करिवो से खाइबाटा तो खाइबाटा तम पई भल हो सेटा एन्जॉय न करिवो से जेमति आइदर तमे गेम खेलिबा को जाओ कि जे कोन पाठ पढिबा को जाओ यू शुड एन्जॉय व्हाटएवर यू आर डूइंग इवन यू आर वर्किंग यू शुड एन्जॉय इट जदि मन दुखर कोनसी कामटा करिवो से केबे भी होबो सब बळे माइंड पूरा फ्री रे और सब बळे हैप्पी माइंड रे बॉडी करो तो तमे गोटे किछि फन करियो चाहो चाहलो गोटे इमेज तमर अपलोड कर दो कि किछि गोटे फनी इमेज अपलोड करी कि तम सांग को लिंक पड़े से कोन करे से S3 पॉकेट से तांको भी क्यूरियोसिटी तांकर भी पड़ियो एटा कोन केमती कोन बोलु से भी जानियो चेष्टा करिवे तो आगे तक तमे जानि परिबो जे केमती कोन होछ तो तमे एक्चुअली लेट्स लर्न विथ फन ओके बहुत सिक्योर अछि जस्ट स्टार्टिंग हला राइट तो तमर काम हला बर्तमान बकेट फकेट क्रिएट करी अकाउंट फर्स्ट क्रिएट करो बकेट क्रिएट करी यूएसएस पका कोन फ्री टियर अछि क्रिएट टियर्स आ कोडा सब बळे दोजी आ विषय सब जाकर तमे R&D करो तो अरविंद आ सतीश जेतु तमे एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑलरेडी तो तम पई बहुत सारा
माने एक्सपीरियंस माने R&D बेसी करिया पड़िबो तुमको बेसी डेटाबेस स्टोरेज सब सेक्शन को जाई चेक करिया पड़िबो कोन अछि कोन स्टोरेज फ्री दोची कोन सब 12 मंथ्स फ्री सब डिटेल्स पूरा चेक करिया पड़िबो राइट एमती चेक कले तमे बेसी आइडियाज पाइबो more than 400 services they are providing किछि सर्विस ता फ्री ट्रायल माने किछि समय पई दोची 30 days पई फ्री ट्रायल दबो तापर चार्ज पकेबो आ किछिटा 12 मंथ्स पई फ्री दोची राइट आ किछिटा दोची जेमती हमरो पूरा कंप्लीटली ऑलवेज फ्री तो सेटा हमें देखियो केमती कोन होची सब ट्राई करियो राइट दैट्स ऑल गाइस एनी डाउट गाइस